So these were the modules that we are going to discuss. Okay, it may change depending on the requirement, but this is how I thought to discuss. And in one session we can discuss more. So first session was there on last Sunday, 20 तारीख को था, and we discussed about how to file a patent application in India. Today I will discuss publication and the request for examination, pre-grant process and FER handling, patentability criteria and exclusion, and I will also discuss about some case studies. Okay. So, I mean, you all are very much aware about the 3 criteria for patentability. Okay. Can anyone tell kya kya hai with along with the sections that are applicable for that? किसी को याद है किसी को? हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, फर्स्ट है न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन सर एक मिनट सर, सेक्शन 21J। ओके, 21J सेक्शन। हाँ, first is to be a new product or process, and it should maintain. Second is details of invention, and ऐसा है क्या? it is to be capable of industrial use. तो क्या बोलते हैं? नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, राइट? Yes. So section 21J. 21J और क्या है? 21L क्या है? 21. It is about invention. न्यू इन्वेंशन ना? Idea to discovery and the procedure for filing the patent application. 21L क्या है? L is I think license, sir. नहीं, it is a new invention ना, novelty. Okay. है ना? You look at the screen ना, screen में दिया मैंने, देखिए. Yes, 21L. हाँ, section Okay. 21 का L ना, this is a novelty, this new invention. Okay. And then like for example है ना, कि अगर एक you are filing in 23 लेकिन 22 में कुछ publish हो चुका है, then your invention is not novel. So novelty number 2 is 21JA. It should have inventive steps. So it should not be obvious to a person skilled in the art, and it must show technical advancement, economic significance, or both. For example, combining pen and torch. So pen is known, torch is known, but agar it's a combination, if it's not novel and it's not helping, it is not helping technical advance or economic significance nahi aata hai, so it may not qualify for a patent on based of inventive step. Although combining pen and torch may be a novel idea, novel हो सकता है, लेकिन अगर इसमें inventive step नहीं है तो कोई टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस नहीं है, तो नहीं होगा. एंड देन 21AC, AC is for industrial applicability, so it should be able to be used or made in industry, agriculture, pharma, जो भी है. So any compound है ना, and that can be synthesized can be as a considered as the industrial applicability. So remember 21L, 21JA, 21AC, novelty, inventive step and industrial applicability. ये 3 criteria है main patentability के लिए. Now there is certain exclusion, certain strict exclusion. मतलब अगर आपका कोई पेटेंट है, if it meets the 3 criteria of novelty, inventive step and industry applicability under 21L, JA and AC, तो भी वो पेटेंट फाइल नहीं हो सकता. So you should remember this. ये कई बार आते रहता है. We'll discuss again. So 3A, very simple language, frivolous or contrary to natural laws, like perpetual motion machine, वो नहीं होगा. 3B, contrary to public order and morality,
लाइक डिवाइस फॉर चोरी करने का आपने कुछ तरीका निकाला, और तो दिस इज नॉट पेटेंटेबल। इवन वी से इट इज नोबेल, इसमें इन्वेंटिव स्टेप है, but it's not patentable. Then discovery of scientific principle, like or discovery of some plants or some objects like new planet, it's not patentable. Then section 3D में बहुत सारे आइटम आते हैं, जैसे कि न्यू फॉर्म ऑफ नॉन सब्सटेंस विदाउट एनहांस एफिकेसी, mere discovery of new property, new use of non substance, mere use of non-process machine apparatus, unless they result in new product or employs at least one new reactant. So we'll discuss. So जैसे कि example, it is there, you can read. New salt paracetamol, that is not patentable. Or aspirin, which is a painkiller, but later aspirin was also known to reduce the risk of heart attacks. So that is not patentable. So, but in the US and the European countries, the new use is patentable, but in India it is not. Okay. And then section 3, mere admixture. So sugar, honey, mix kar diya aapne. Okay. And then 3F, arrangement or duplication or device, pen and laser pointers, command kar diya. 3H, horticulture, method. Okay. Method, not instrument. Method, काम कैसे करते हैं. So it's like you cannot stop a farmer from doing agriculture. उसको आप रोक नहीं सकते, मेथड को रोक नहीं सकते. इंस्ट्रूमेंट है, उसको आप कर सकते हैं. तो इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग को रोक सकते हो, बट यू कैन नॉट स्टॉप फार्मर फॉर डूइंग फार्मिंग. सिमिलरली डॉक्टर्स को नहीं, मेडिकल में आप रोक नहीं सकते. सो मेथड ऑफ सर्जरी और ट्रीटमेंट और न्यू वे ऑफ सर्जरी, new way of treatment, you cannot patent. 3J, plant, animals, seeds, biological processes, their parts, वो सब नहीं कर सकते. 3J. 3K, computer program per se, software code for payroll system, something like that, you cannot patent. And 3N is for traditional knowledge, and 3P, that is for the traditional knowledge. 3N, I have written wrong here. 3N is for the circuits in process, how the information is processed, and 3P is for the traditional knowledge. So it is wrongly written here. Let me correct it. So this is 3P, and 3N is for the presentation of the information. So the way an information is presented, that cannot be patented. And then there is 3O, that is the topography or integrated circuits. So there is a 3O, and that is not patentable. So how to remember this? Any idea? सर मैंने तो इसको लिख लिख के याद किया है सर. लिख लिख याद किया आपने? जी जी सर. ओके. मतलब कुछ कुछ अल्फाबेट वगैरह देख के भी याद करने की कोशिश किया. हाँ हाँ. जैसे टोपोग्राफी का वो मान लीजिए. हाँ, टॉपिक वो करेक्ट. ऐसे करके. और 3K जैसे ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो के को कप्पा में मैंने याद किया. कप्पा इज यस. J for jungle. मैथमेटिकल जो. जी ऐसे करके थोड़ा बहुत किया. लिटरली एल फॉर लिटरली, ये ऐसे करके मतलब नहीं. हाँ एल फॉर लिटरली. हाँ. फिर हो गया आपका सर, जैसे एच हो गया हॉर्टिकल्चर. एल है, हाँ करेक्ट. 3L. जी. O है. देन M है. M क्या है? एल तो सर लिटरेरी वर्क था शायद. एल. हाँ करेक्ट. हाँ. एल फॉर लिटरेरी है. M क्या है? एम था एम था सर मेथड ऑफ एग्रीकल्चर. नहीं. या मेडिकल था क्या? मेंटल एक्ट राइट. मेंटल एक्ट राइट. यस सर. तो ऐसे करके E क्या है. था? E is for admixture.
मिक्सचर का आर ही आता admixture. है ना, मिक्सचर, तो ई, Okay, okay. है ना. So this something you can remember that way. Okay. Okay, so I have one question for you. Let's discuss. So section 3D, mere use of a non-process machine apparatus, it is not patentable. So, so this centrifuge, it is used in laboratory. This non-machine. So, can we claim use a centrifuge to separate mango pulp in a juice factory? So not getting your question properly, sir. Okay, so centrifuge is Centrifuge known, right? is known. Yeah, Centrifuge is centrifuge known. I know. Yes. So my question is, can we patent centrifuge? Oh no, sir. For a new use, Yes, we sir. cannot patent, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That some advancement is there in the pulp, sir. To mango extraction or some transportation will be taking by these something is going changing the technicality, so it is patentable. Okay. Centrifuge is the same, so I think it's a mere discovery, so it's not patentable. Good discussion. So it says mere use of a known process, right? Mere use of a known process, mere use of a known process machine apparatus, unless results in new product. Okay. So is mango pulp a new product, No, sir. or is it employing a new reactant there? No, sir. No. Good. So is it patentable then? No. No, sir. No, sir. Good. So like, I mean, this is the way you need to use your logic. Okay. So mere use of non-process machine apparatus unless results in a new product. New product नहीं बन रहा है and does not employ a new reactant. तो इसलिए patentable नहीं है. Okay. So not patentable. So machine is already known. The process is also known. There is no new product. There is no new reactant involved. And it is just a new use of an existing process machine for a different material. So therefore it is not patentable under section 3D. Okay. So if a question comes like this, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, so बहुत क्लैरिटी के साथ आपका आंसर लिखना है. If you do not write with clarity, नंबर से कम मिलेंगे. आपने अगर सिर्फ लिखा कि नहीं, it is not patentable, मतलब पेपर 2 में, तो maybe you get less mark. But if you write like this is already known, process is known, no new product, no new reactant is involved, and it is just a new use of existing process, so therefore not patentable. If you write like this, you will chance that you'll get good marks. And also in the interview, if you explain it like this, so you get good marks. Just not by just saying कि नहीं ये patentable नहीं है. क्यों? My gut feeling says, मेरा gut feeling है कि ये patentable नहीं है. ऐसा अगर हम लिखते हैं या बोलते हैं या बात करते हैं, so it does not look like हमको understanding है law के बारे में. Okay. So next, let's discuss some. So when it could be patentable? Where there will be a new discovery. New discovery means? No. Discovery cannot be patented. Discovery Means not patentable, no? Something So new if- product which is formed from the other one, which results in the formation of new product or a new reactant. हाँ, न्यू प्रोडक्ट है. फिर मतलब सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस को मॉडिफाई किया आपने, कुछ कंफ्यूजन चेंज किया आपने, उसमें कुछ पैरामीटर आपने स्टडी किया आपने, है ना, जो कि एक स्पेसिफिक एनहांस इफेक्ट होने से होगा सर. हाँ, एनहांस रिजल्ट दिखा पाएंगे. करेक्ट, है ना. सो कुछ नया प्रोडक्ट बना रहा है, या फिर यू आर यूजिंग अ न्यू केमिकल इन द प्रोसेस, है ना. सो अनटिल यू शो दैट यू आर यूजिंग अ न्यू रिएक्टेंट और न्यू पार्ट कुछ ऐड कर रहे हैं जिसके वजह से कुछ एनहांसमेंट हो रही है, देयर इज सम इन्वेंटिव स्टेप, इट्स नॉट पेटेंटेबल. ओके. So let's discuss some case laws based on some sections, and then you can also read this from
internet or some case. There are many websites which describe the case law. So section 3B, one shot kill, is it patentable? No sir. क्यों? Contrary to public order. कौन सा है ये? Section 3B. 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 So I invention a device invention that claim to enable one shot kill mechanism or targeted elimination. एक बार में किसी को मार देते हैं. So this is not patentable under section 3B. So this will be rejected, right? So the ground will be contrary to public order or morality. And it causes serious prejudice to human, animal, plant life or environment also. अगर environment को भी खराब करता है तो भी patentable नहीं होता. Okay, let's discuss this one. So you know about this case, Novartis versus Novartis case? Novartis पढ़ा था ये. हाँ, कोई बात नहीं. So Novartis filed a patent for Gleevec, a beta-crystalline form of non-cancer drug. So I would request you to read about this case some more. So here I've just summarized some of the cases, and for your understanding that is enough. But you should read some little bit extra about these cases. So Novartis filed a patent for Gleevec, a beta-crystalline form of a non-cancer drug. So the question was, is the beta form patentable under section 3D? So section 3D क्या बोलता है? The mere discovery of a new form of a non-substance. So beta, you know this alpha beta forms, yes, right? Sir. Or racemic mixture, R and S forms. Right. So this is the new form of a non-substance. And because no enhanced therapeutic efficacy is shown over the known form. So अगर वो दिखाते कि जो known form है पहले वाला उसके कंपेयर में जो बीटा क्रिस्टल फॉर्म है ज्यादा बेहतर है एंड इसका एफिकेसी बहुत ज्यादा है, बहुत कम मात्रा में लोग ठीक हो जाते हैं. अगर मान लो कि पहला वाला फॉर एग्जांपल अगर 10 ग्राम खाना था, इफ वन हैज टू टेक 10 mg, ये वाला जस्ट 1 mg इज एनफ, दैट इज सफिशिएंट, ऐसा कुछ दिखाते हैं वो लोग, देन इट वाज पॉसिबल टू पेटेंटेबल. लेकिन दे डिड नॉट शो एनीथिंग, so it was not patentable. Okay. You can keep your unmute. Section 3. You know about this Enercon India versus Aloys Wobben case? Hello. You can keep yourself mute, if you are. So in the case of Enercon India Limited, the composition question was regarding this lubricating oil. So what they did, that they wanted to claim lubricating oil and just the mixtures to be used in a wind turbine. And they wanted to claim the just mixtures of some additives, which additives are already known. So is it patentable? So if it is mere admixture, then it cannot be patented, sir. What is meaning by mere admixture? Means if it doesn't result into enhanced efficacy, just aggregation of properties, then it is not patentable, sir. Suppose component A is known to cure some diseases, suppose cough. Component B is known for fever. If you mix both the things and it is for fever and cough, then it is just the aggregation of the properties, sir. Correct. But correct. if it, yes. So. Right. लेकिन अगर वो मान लो कि one is for headache and one is for fever, but when you mix them together, it becomes a drug for cancer, है ना? Yes, sir. Then it can be patented. हाँ. तो in lubricants में क्या होता है कि they use many additives. Okay. So if you're not able to show what is the impact of the additives, so it comes under just mere admixture. So it is not patentable. So this was the case. So it does not show any synergistic effect. It is only aggregation. So synergy is required. If it's not there, it's not patentable.
Section 3 पे केस है. So this was Biswanath Prasad, Radhey Shyam versus Hindustan Metal Industries. So there was a granted patent for device for manufacturing utensil cap, especially for making aluminum or metal cap for kitchen utensils like pan and lids. So this claim was it says that invention was mechanical apparatus designed to produce dome caps for utensils. It was very simple, but already these methods are already known. Okay, so therefore this patent was also not rejected. So it involves a die, a punch, a metal pressing mechanism. Then apparatus are used for non-mechanical element, but combine them in a specific way to improve cap making. तो कैसे एक डाई को लिया, पंचिंग कैसे करते हैं, कैसे प्रेस करते हैं, दिस आर ऑल नोन. डाई भी नोन है, पंचिंग मशीन भी नोन है, प्रेसिंग मशीन भी नोन है, और वो सबको एक कमांड कर दिया, देन एक सीक्वेंस में डाल दिया, देन उससे कि इट इज न्यू हो गया मतलब. सो दैट वाज द केस एंड देयरफॉर इट वाज नॉट पेटेंटेबल. सो इट वाज जस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ नोन टूल्स. आपके पास 4-5 टूल्स हैं. जैसे आपने देखा होगा ऑटोमेशन में क्या करते हैं, व्हेन दू ऑटोमेटेड, तो जो काम हम इंसान करते हैं उस काम को एक एक स्टेप में लगा देते हैं, एंड इफ इट डज नॉट शो एनी इम्प्रूवमेंट, सो इट इज नॉट पेटेंटेबल. सो इसमें पेटेंट होने क्या करना चाहिए? So section 3 of says the mere arrangement or rearrangement or duplication of known device is functioning independent of one another in a known way. अगर सब इंडिपेंडेंट काम कर सकता है तो वो पेटेंटेबल नहीं रहता. यू जस्ट कंबाइन देम, और वो इंडिपेंडेंट भी काम करता है, अपना अलग काम करता है. सो कैन यू गिव एन एग्जांपल फॉर एनीवन in which case this could have been patentable हो सकता था? Sir, after combination of this elements, suppose element A, B, and C, if they independently can work and there is no synergy, then sir, it cannot be patented. But if these components are interconnected and is dependent to one another, and also it gives some other output, then it can be patented, sir. हाँ, तो एक सिनर्जी होना चाहिए, एंड देन ऐसा होता है कि एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते. दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक के बाद एक स्टेप होता है, एंड देन इट शोज सम इन्वेंटिव स्टेप बेस्ड ऑन प्रायर आर्ट, देन इट कुड बी पेटेंटेबल. Then so this was not patentable. So this was the case. 3K का एक केस है. So Ferid, Allani and Union of India, जो 1919 का है और 1990 का है. So applicant claimed a method of assessing web application on thin clients, and issue was it merely a software person? So क्या था इसमें कि पहले जब इन 1990s, ओके, तो जब हम कुछ सर्च करते थे वेबसाइट पे, सो व्हेन वी सेंड आवर सर्च रिक्वेस्ट, तो दे मॉडिफाइड इट इन अ वे दैट इट इज मोर बैंडविड्थ कम लगता है, एंड देन इजी होता है, और इसका मेमोरी कम लगता है. सो दैट वाज समथिंग दे वांटेड टू पेटेंट इट. सो क्या इज इट पेटेंटेबल? क्या लगता है आपको? Sir, software per se cannot be patented, but if it is connected with the hardware and it governs some functionality in the hardware, then sir, probably it can be patented. But alone the software is a mental act or formula maybe, or maybe algorithm, so it cannot be patented. So this was the patent number INPCT 272 Delhi 00705. So what they said, that they added a pre-filtering, sending one final and a well-formed query. Okay. So the IPAB ruled that it was patentable because it adds to the higher speed, lower memory use, and better data handling. ये दिखा करके, and this was made patentable. 3I, medical treatment. So that means
So, sir, in the last class, it was patentable because it is connected with the hardware and it is governing the functionality of the hardware, right, sir? Correct. So when you use this, it adds to the higher speed, lower memory use, better data handling. And there's a technical effect that is coming up when you use this, right? So therefore, it was made patentable. Section 3I, AstraZeneca and the controller patent. I would request कि जो मैंने जितने केस डिस्कस किया ना, you read more about these cases, more from the Google or the other sources. And if you have any doubt, then you can discuss. We cannot discuss all the cases in detail in this class. And some dates may vary. So I would request to just double check it and read it yourself. So AstraZeneca, they filed a patent application in India. And उनका patent किस पे था? तो treat the respiratory disease, chronic obstructive pulmonary disease and asthma. So what they use, there are two medicine, budesonide and formoterol. So there are two drugs that can be used to treat asthma kind of condition. दम फूलता है, सांसें फूलती है, बहुत सारे बच्चों में हो जाती है, and also due to allergic reactions हो जाती है. काफी लोग बच्चों में या बड़े में भी सर्दी होने के बाद हो जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है. So budesonide and formoterol, ऐसा कुछ combination they proposed. So these are known, budesonide and formoterol, these are known to treat the diseases. So claim did not focus on new formulation composition, but they focus on how the drug to be administered to the patient. Patient को वो drug कैसे देना है. It was not on the formulation because this formulation is known. लेकिन drug कैसे देना है वो, जैसे कि एक बार एक बच्चे को बीमारी हुई थी, डॉक्टर ने कहा कि दो टाइप के उन्होंने इनहेलर दिए. बोला कि ये पहला इनहेलर जो है उसको पहले देना और सुबह देना और शाम को ये देना और फिर रात को दोपहर देना. तो ये जो अल्टरनेटिव वे में जो देने के लिए बोल रहे हैं, सो इस तरह का अगर उस पेटेंट है तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है हाउ टू यूज दिस, है ना. तो कैसे यूज करना है, पहले से करना है, बाद में से करना है. सो द वे टू एडमिनिस्टर द ड्रग वो पेटेंटेबल नहीं हो, क्योंकि दैट विल क्या करेगा, दैट विल स्टॉप डॉक्टर फ्रॉम परफॉर्मिंग देयर टास्क. जैसे एक किसान को खेती करने से आप रोक नहीं सकते, डॉक्टर को भी हम जाके उसका हाथ नहीं बांध सकते कि अभी आप ऑपरेशन नहीं करो, क्योंकि आपका ऑपरेशन करने का तरीका हमने पेटेंट कर दिया है. क्या ऑपरेशन तरीका है कि पहले से उसको एक चीरा लगेगी, कांटा चीरेंगे उसको बॉडी पार्ट्स को, फिर कुछ करेंगे, फिर सिलाई कर देंगे. ये प्रोसेस हमारा पेटेंटेबल है, आप ऑपरेशन नहीं कर सकते. तो इस तरह का जो मेथड है वो पेटेंटेबल नहीं है. So this method of treating respiratory disease was not patentable under section 3I. So this was rejected. Section 3P का है, you know this more famous case, हल्दी का केस है ये, they have taken turmeric case. So इसमें क्या था, the patent was filed by Indian origin research in US. Very very interesting. इंडिया में उनके रूट्स हैं, तो जो भी इंडिया सब जानते हैं कि हल्दी काफी यूजफुल रहता है दर्द के लिए. दूध में हम हल्दी पीते हैं, और कभी कभी अगर चोट लग जाती है तो हल्दी में चूना मिक्स करके हम लोग उस चोट की जगह पर लगाते हैं और धीरे धीरे दर्द कम हो जाती है. सो दिस इज नोन टू अस, बट दिस इंडियन ओरिजिन वालों ने फाइल किया था यूएस में, पेटेंट फाइल किया था. देन वी अपोज्ड इट, पेटेंट वाज ग्रांटेड, देन वी अपोज्ड इट, द ग्रांटेड पेटेंट. एंड सीएसआर ने, हमारा सीएसआर जो है, उन्होंने इसको अपोज किया था. एंड then they showed that this is the part of Indian traditional knowledge. To showcase this, they produced document from Charak Samhita and other Vedic literatures, and also there was one publication in scientific journal also regarding this turmeric use for wound healing. So this is the patent, okay. और अभी इसको देखोगे तो it says कि it is revoked. So what I have done, I have taken out from Google the claims which was there originally. So if you read the claim, क्या बोलता है, a method of promoting healing of a wound in a patient which consists essentially of administering a wound healing agent consisting of an effective amount of turmeric powder to said patient. देखो
जस्ट सेज कि आप टर्मरिक, तो ऐसा अगर कहते हैं तो आई मीन यू कैन नॉट प्रिस्क्राइब टर्मरिक, ऐसा होता तो सो इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लम होती, क्योंकि हमारे हमारे घर का हम लोग यूज करते थे। एंड देन यू से इसमें क्या लिखा है, कई बार हम टर्मरिक को ऐसे भी खाते हैं, तो इट वाज इसी इट सेज दैट हाउ टू एडमिनिस्टर इट, so it says essentially of administering a wound healing agent, so the process of administering is orally and then topically स्किन पे लगाना, then it says both orally and topically, मतलब खा भी सकते हैं लगा भी सकते हैं। एंड देन wound is a surgical wound, सर्जिकल wound मतलब ऑपरेशन करते तो अगर कटता है तो, एंड देन claim on where the said wound is a body ulcer, अगर अल्सर भी हुआ है तो भी हम ठीक कर सकते। तो ये सारे जो मेथड हमारे नोन थे पहले से, लेकिन इन्होंने पेटेंट फाइल किया था ये, एंड दिस पेटेंट आल्सो ग्रांटेड, देन सीएसआईआर ने उसको अपोज किया था। अपोज करने के लिए अभी कैन एनीवन टेल व्हाट इज अ प्रायोरिटी डेट ऑफ दिस एप्लीकेशन, यहाँ पे देख कर बोल सकता है कोई? हैव यू एवर सीन पेटेंट एप्लीकेशन लाइक दिस? किसने देखा है पेटेंट कभी, यूएस पेटेंट को? Yes, sir. PRT date will be foreign application date, where other country they applied that patent. That is the PRT date in India. December 28, 93 तो फाइल डेट है ना ये, फाइल डेट है सर। प्रायोरिटी सर दिख ग्रांट नहीं डेट रहा है कौन सर सा है? मुझे। ग्रांट डेट कौन सा है ग्रांटेड इसमें? होगा मार्च 28, 95। 9 करेक्ट, ओके। एंड इन्वेंटर यू कैन सी सुमन के दास ना, हरी हरी पी, सुमन के दस है ना? सो यस सर। सो दे आर इंडियन ओरिजिन, इन्होंने फाइल किया था, एंड असाइनी इज द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर, so they must be working there and then they file it. So you can see in US class code and then the IPC class code यहाँ mention किया गया है, and okay, so there are some details are there, we'll discuss some later. So this is a claim, but if you now see this claim, they are revoked, so this patent is no longer valid. Okay, anything you want to discuss now on this topic?